Okay, good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter Democracy of Political Science. So, as I've given you the question regarding democracy itself, so it's better to clear you all the concept with it. So, basically, what is the meaning of democracy? Democracy is a type of government. In the entire world, only democracy is a kind of government which is solely adopted by every country, because we all know that democracy is a kind of government which provides each and every rights to the people living over there. Okay, now democracy is a type of government, and it's a system of governance which is based on the power of people, which means that many philosophers says that the democracy power rests in the hand of the people itself. डेमोक्रेसी क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें मीन्स ऑल द पीपल, जहाँ पे सबको अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का राइट्स होता है. दे यूज टू गेट मैनी मोर राइट्स सो दैट दे कैन लिव पीसफुली ऑन दैट country. Apart from many countries, they are still following the dictatorship or the non-democratic system, जहाँ पर लोगों को अपने अपने rights नहीं मिलते. As per Abraham Lincoln, what is the meaning of democracy? Democracy is a type of government which is for the people, of the people, and by the people. Now, in your chapter, you are going to learn about various forms of democracy, like types of democracy, कौन से होते हैं. So, main forms and associated concept of democracy are as follows. That is, first one is political democracy. Political democracy basically क्या होता है? डेमोक्रेसी में जो पहली चीज़ आती है, that is the equality. जो इक्वालिटी होती है, विच विल ब्रिंग्स अप ईच एंड एवरी पीपल इक्वल इन सॉर्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इन सॉर्ट्स ऑफ स्टैंडिंग फॉर द इलेक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग. So, over here, political democracy raised that each and every person has the right to stand for in the elections and to be elected as the representative of the people. So, there must not be any discrimination regarding any opportunity or the people background. Suppose एक candidate हो, उसका background अलग हो, like his father was a goldsmith or some other thing, but the person is interested in politics. That doesn't mean that he won't get the opportunity to take part in the election. So, political democracy states that nobody must be discriminated on the basis of caste, religion, race, or anything. So, next is social democracy. Social democracy means a kind of status. Every person has their own dignity, on status. So, all the person on their perspective, on their society basis, they must be respected and they must have their own dignity. Economic democracy means there must not be any discrimination on the basis of occupation of property or having money, bank balance, and all. Means suppose rich and poor both are there, both population are there in our country. दोनों हमारे कंट्री में ऑन इक्वल प्रोपोर्शन और एन इनइक्वल प्रोपोर्शन दोनों ही होते हैं. सो दैट डजेंट मीन दैट कि गवर्नमेंट सिर्फ रिच पीपल के बिहाफ में डिसीजन लेगी, दैट विल मेक प्रॉफिट फॉर ओनली द रिच पीपल. यहाँ पे क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में rich and poor people both are they both have the right to take the opportunities. Now, moral democracy और ethnic democracy. Ethics होता है वो एक अपने अपने principles होते हैं, वो way of working. So, moral describes what? How the person is assuming his profession. Suppose many people are there, many political parties are there who are working in a very honest form. They loved working in a very honest form. So, moral democracy states that a person must be honest towards his profession and must work on his own way, so that he can not only look after his own beneficiary but also where the platform where he is working, जहाँ पे वो काम करता है, जहाँ पे वो अपने लोगों को benefits दे सकता है, he can make his worth. That means he have to work on the basis of moral democracy. So let's look over the political democracy. Liberal thinkers have a propose of two types of political democracy. One type of democracy in the state and another type of democracy in governance. State means what? State basically in political science क्या होता है? State को हम एक कंट्री कंसिडर करते हैं. और दूसरा क्या होता है? गवर्निंग सिस्टम में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए. दैट मीन्स देयर मस्ट बी एन इक्वलिटी सोर्स ऑफ पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन. जब डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो पावर होता है
होता लिमिटेड हैंड में ही है. सपोज प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत एक्सट्रीम पावर है या प्रेसिडेंट के पास एक्सट्रीम पावर, बट विद इन सम सर्कमस्टांसेस क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट समहाउ अपने कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भी यूज़ करने को देती है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल डिसेंट्रलाइजेशन. वो परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है. एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स व्हाट, वो अपना पूरा पावर उसे परमानेंटली प्रोवाइड कर देता है. दैट इज डेलीगेशन. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन delegation and discrimination. So the type of political democracy in a state means democratic state. This type of political democracy in governance means a democratic government. That means first one is that democratic state. डेमोक्रेसी अगर मान लो अपनी कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया, बट स्टिल इट इज़ नॉट अप्लाइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर स्टेट वॉन्ट बी और दैट पर्टिकुलर कंट्री वॉन्ट बी कंसिडर एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो अगर कोई भी स्टेट, अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट करता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या होती है कि डेमोक्रेसी क्या कहता है कि देयर मस्ट बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ईच एंड एवरी पीपल. That means also along with it that every person's vote must be whole and soul the consent of that particular person. ऐसा नहीं हो कि मतलब whatever the vote given to that particular person is somehow for the sake of greed and all. So another type of democracy in governance means the governance systems must be on their basis, like it must be an means governance system must be kept on an eye. कोई भी गवर्निंग सिस्टम पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम रहता है, देयर इज़ अ यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी रूलिंग सिस्टम. अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी काम कर रहा है तो उसके अबव कोई ना कोई और प्रायर अथॉरिटी होती है हु यूज टू कीप अ वॉच ऑन देयर वर्क. सो ईच एंड एवरी गवर्नमेंट इज आंसरेबल, ईच एंड एवरी यूनिट इज आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. कोई भी काम होता है किसी भी बेसिस में, अब जैसे आप मान लो कि जैसे फ़ंड पास होते हैं, तो फंड पास होने के बाद डजंट मीन दैट ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी विल शेयर इट्स ओन प्रॉफिट. उसमें ये होता है कि फंड्स प्रोवाइड कर दिए ना, आफ्टर सम टाइम दे आर गोइंग टू वॉच ओवर योर वर्क, दैट हमने आपको इतना फंड प्रोवाइड किया, नाउ विथ व्हाट सॉर्ट्स ऑफ वर्क यू हैव डन फॉर द कंट्री. Okay, so political democracy states that governing system में there must not be any discrimination. If member of legislative assembly में सारे states को same power दे रखे, तो मतलब पूरी कंट्री में लगभग स्टेट्स को एक पावर दे रखे हैं, दैट डजेंट मीन दैट आप कोई क्रिटिकल स्टेट में उस एमएलए के पावर्स को सीज कर सकते हो. Now, social democracy states that there must not be any privilege over any religion or caste or any heredity. Basically, पहले क्या होता था कि पहले हमारे यहाँ पे प्रिंसली प्रोविजंस होते थे, तो उसमें क्या होता था कि किंग्स सन मीन्स जो प्रिंस होते थे वही अपना फादर का सक्सेसर्स होते थे. बट नाउ इट इज़ इट्स नॉट बीइंग बिलीव्ड एज इन दैट फॉर्म. क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर हो, इट्स नॉट नेसेसरी. It depends upon the capability and the interest of the work. Everyone can be the president of India until and unless that particular person is capable and or he is interested in that kind of field. So social democracy is a form of democracy. Okay, privilege. In practice, two things are necessary for establishing social democracy. Means our country, some of the country used to adopt only one thing, that is political democracy or some other thing, but hamari country has a lots of diversity, so we have to adopt all the types of all the forms of democracy, that is social, political, economical and moral democracy. So means for social democracy में क्या होता है, there must not be privilege on the basis of religion, caste, race, language, gender, prosperity, English, etc. should be abolished. Each citizen should be given equal opportunity of social progress. That is the thing. Okay, now as I have told you already that हमें privilege का मतलब क्या होता है, that मोस्टली एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के पीपल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना. दैट इज़ नॉट द थिंग विच इज़ एक्सेप्टेड ऑन द फॉर्म ऑफ सोशल डेमोक्रेसी. दैट मीन्स देयर मस्ट नॉट बी एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, that a person who is means privileged on the basis of giving them vote on the basis of religion, caste, race, language, gender, or means their prosperity. Basically, our government somehow it's working on the same basis, but we can see the discrimination going on in our country. So economic democracy, the form of democracy in economic
called economic democracy. Now Marxists kya the? They are the philosophers, and socialists have proposed the theory of economic democracy in modern times, which has been stated as that there must not be any discrimination on the basis of the profession they are working, the money they are earning, or the profit which they are making. Every person must have their own economic status and must be respected on the basis of this. Right now I'm just clearing the basics of democracy, so you have to just look over it. Now next is moral democracy. Some thinkers have accepted the democracy in the form of moral and spiritual philosophy of life. The moral perspective of democracy is called moral democracy. Let me elaborate you for that. Means moral democracy basically enhance a person's dignity, enhance a person's perspective. That क्या होता है कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ले लो, अगर वो अपनी वर्क को ऑनेस्टली नहीं करता तो somehow is in the on that particular field only for a specific period of time. As we all know कि हमारी कंट्री में इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं, और अगर उस जो भी पॉलिटिकल लीडर है उसने इकोनॉमिक कंसेप्ट, सोशल कंसेप्ट या पॉलिटिकल कंसेप्ट को अलग रख के अपना काम किया, that means he is not working on its basis. If he is looking only over his profit, then somehow on the next periodic election he won't be elected with the same respect. So moral democracy is very necessary because अभी की जो population है वो क्या होती है, fickle minded का मतलब क्या होता है that they are used to easily get in the words of others, यानी दूसरों की बातों में वो जल्दी आ जाते हैं, and then after looking the work which has not been done by that political party, his vote can easily be shifted to another party. Okay, so moral democracy states that a person is quite in the eye of the people, because whatever the work he is doing, whatever the priority he is giving to the people, he will be respected or he will be honored in that manner only. So let me tell you one thing, that democracy was firstly adopted in which place? That was Greece. Okay, Athens and Sparta we have already discussed in 9th class. So democracy was firstly adopted in Greece, that is in Greece the Athens. वहीं से ओलंपिक भी शुरू हुआ था. Along with that ओलंपिक की एक स्टोरी भी है मैक्सिको की, जिसमें क्या हुआ था कि एक 200 मीटर की रेस हुई थी इन 1968. तो उसमें क्या मतलब जो गोल्ड मेडल जीतने वाले थे, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज, दे वर अफ्रीकन अमेरिकन. तो अफ्रीकन अमेरिकन को ह्यूमन राइट्स नहीं था मैक्सिको में, तो वो लोग गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी वो अपनी गर्दन झुकाकर खड़े थे वहाँ पे जब पोडियम में, जहाँ पे उन्हें मेडल मिलता है. एंड जो सिल्वर मेडल जीता था वो था ऑस्ट्रेलियन एथलीट. तो उसी के शान से वो अपनी गर्दन सर उठाकर खड़ा था, एंड ही वाज गेटिंग द ऑनर ऑफ मेडल. बाय लुकिंग दिस डिफरेंशिएशन देयर रोज एन प्रोटेस्ट. वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होने लगा कि वाई द गोल्ड मेडलिस्ट इज बोइंग डाउन हिज हेड एंड वाई द सिल्वर मेडलिस्ट इज putting his own head above the air. Means why he is standing in a very honored manner and why the gold medalist is standing in such a way. Then the discrimination was explained that the one who is standing bowing their head is African Americans, and African Americans doesn't have that right. So the idea of adopting democracy comes after this discrimination being seen by the people over there. So this is it. Just if your concept is not clear, means you can just suggest, and you can just ask for the any doubt whatever you have, and also I'll try a little bit to improve more in this video explanation. Thank you.